Okay, introduce yourself. Okay, good evening, everyone. My name is Vasu Gupta. No, this is wrong. Good evening, everyone is not there. Hello, everyone. No way. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. If there are two panelists. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. To both. Okay, sir. As per the time आपका afternoon के आसपास ही है. Oh, yeah. So wish both and wish independently. आज 4 में हमारा एक लड़का wish करना भूल गया. So they pointed out to him कि you did not wish us. You don't feel like wishing. उसने कहा कि no sir, I had become little anxious. Sorry for that. I wanted to wish, but फिर उसने वहाँ पे wish कर दिया मुस्कुरा के. तो अच्छा हुआ, दिस करेक्शन वाज नीडेड. और पीछे मैं आपसे पूछने लगा था कि सर पीछे नहीं टास ना लगानी भाई. हाँ अगेन कितनी बार मैं पॉइंट जस्ट इतनी की लोअर बैक, जस्ट इतनी की लोअर बैक शुड टच द चेयर. अपने आप ही स्ट्रेट हो जाओगे. व्हेन यू पुट योर बैक अगेंस्ट द बैक सीट तभी डाउन होता काम. व्हेन यू आर जस्ट लाइक दिस, जस्ट इतना लोअर बैक, एक्सट्रीम लोअर बैक. टेबल पे हाथ रख ना सकते ना हैं? ना ना नहीं। ना ना सब कुछ इधर. ये ना 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 हाथ यूज करने राजा, बट टेबल पे नहीं ना रखने. हम कोई मीटिंग के लिए नहीं आए, हम इंटरव्यू देने आए. सो okay. Okay, starting session. So yeah, tell us about yourself. So start से wish करो. Okay, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Okay, my name is Vasu Gupta. I hail from Ludhiana, Punjab. I completed my school from DAV Public School, and I completed my undergrad in BBA third year marketing from NMIMS Mumbai. Talking about my family, my mother is a professor and a scientist in Punjab Agriculture University, and my father runs a software trading business. And I'm also a national level softball and baseball player, and I was also the state captain of the same. During my college days, I was a volunteer in the logistics department of YU, which is the cultural club of our college, and also in. कितने तक उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा? It is now almost we are nearing 50 to 60 seconds. So meaty things are coming now. So this DAV public school is redundant. Okay. NMIMS is okay. And my mother is a teacher, scientist, wonderful. Father runs a stock market, wonderful. Now curtail this school thing, and you say I graduated from NMIMS with specialization in marketing. Okay. Last year. And what about लास्ट ईयर भी मत मेंशन करो अपने आप उनको उस तरफ ना. फिर तो लाएंगे, स्पोर्ट्स तो आएगा ही. अभी टाइम नहीं ना बच रहा उसके लिए. कितने सेकंड्स का होना चाहिए? अराउंड 50 to 60 seconds आइडियली. इफ दे गेट इंटरेस्ट, जैसे अब आप स्पोर्ट्स का अच्छा बोलने लगे, फिर कॉलेज में थे एक्टिविटीज ये सब, these are interesting things. So if they find interest in it, or somebody is explaining about his or her job, then they will give you 30-40 more seconds. Okay. But I normally, by my experience, by this time, when they have heard school, DAV, फलाना ढिमका करते करते थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा. टाइम हो गया था. So let's start again. Introduce yourself. Good afternoon, sir. My name is Vasu Gupta. I hail from Ludhiana, Punjab. I completed my undergrad from NMIMS Mumbai, specializing in marketing in the third year. Also, I'm a national level softball and baseball player. I was also the state captain for the same. During my college days, I was a volunteer in the YU club in logistics अब ये department. देखो, ये आ गया 30th सेकंड में, 25th सेकंड में. चलिए, अब वायु के आगे वाली चीजें मुझे पता है कि आर मोर इंटरेस्टिंग. वायु क्या है, तो अभी वो आराम से 1.25 मिनट सुनेगा. करो. YU club, which is the cultural club of the college, and I was also in the projects department in SRF, Social Responsibility Forum, which was responsible for visiting the NGOs and conducting a marathon, which was meant for the awareness for the needy people. And I also have done around 2 months of internship in Calanova under the influencer marketing head. And yeah, that's the company is into what? Like Calanova? It's an FMCG company, basically Kellogg's. Right now it has been acquired by Mars. So you mentioned Kellogg's, which is famous name. So I worked in Kellogg's with this department. Okay. Now it is very good. As soon as you say this, immediate question is, why did you not go for a job post your graduation? You had a very good internship. So, sir, my motivation for not going in a job was that I was not very clear that time that what I want to do, whether I want to pursue my education further, or I want to start my own business, or I want to go with my father in his business. But a long time I came to the clarity that yes, I want to pursue MBA. And
For that, I need to study further to improve my skills and yeah, on everything. So now, why? How did you decide that? Why not join Papa's business and go for MBA? What were So, the main factors? so the main factors around me was during my internship days, what I saw was that all the people there were MBA, and the basic criteria for getting into the FMCG sector, that the sector interests me the most, the FMCG sector, was a MBA from a good college. That's their first criteria for getting into it. In good profiles, add kar dena sir. For in good profiles, Okay. the people I saw in good profiles, they were mostly MBA. They were almost all MBAs from top B school. Yeah. क्योंकि वहाँ पे भी लो एंड वाले भी तो रहेंगे, तो गुड प्रोफाइल वाले जो हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, वो वाले इधर रहेंगे, बाकी सेल्स एग्जीक्यूटिव तो रहेंगे. So good word is important. Good profiles. Just add these adjectives. Now going to why IMI? So, sir, IMI is a reputed college in its domain. It is known for its marketing and finance courses. It is also reputed for its good placement records and a good peer network that I will make when I study over there. During my BBA days, the BBA gave me the foundational knowledge, and MBA in IMI will give me the more practical, more analytical, and more decision-driven knowledge. Which was your favorite subject? My favorite subject was consumer insights and consumer behavior during my BBA. So in those 2 months of internship, what was your single most achievement or contribution? I was basically in the relaunch of the Kellogg's Chocos. You must have heard about it. So it was the biggest campaign that Kellogg's have ever taken for the remarketing of a product, because right now in the FMCG space there is more awareness towards more of the healthy alternatives. Before, the Kellogg's was made out of maida and all the bad things like palm oil and everything, but after the shift in the market and the consumers, it has to pivot to more healthier alternatives like atta and without the palm oil. So that was mainly the marketing campaign that I led. I was into writing the scripts for all the inner people of Kellogg's. So you went to that internship through an interview round? Yeah, sir. So they did not offer you a PPO, replacement offer? So I told you earlier that for getting into the Kellogg's in the FMCG space in marketing particularly, they require an MBA. So they were clear when they came for internship that they will not offer a PPO? Yes, sir. Which specialization you want to do? Marketing. What is the difference between sales and marketing? So, sir, difference between sales and marketing. So, marketing, I would say, is more about creating the awareness around the product, and sales is basically converting that awareness into revenue for the company. Marketing is more of a long-term thing, and sales is a short-term thing. It is marketing mainly drives on the getting to know the consumer needs, creating a product around it, and creating awareness around it. And it is a long-term thing in the sense that it enhances customers' loyalty, recall rate. You are the marketing chief of a TV manufacturing company in India. Okay. And you have to launch a new TV, new product. What will be? How will you go about it? Right now, the electronic sector is highly competitive. So there are many companies like TCS, VW, manufacturing of televisions, which are Chinese counterparts, and they are offering a good range of TV 4K, Ultra HD at very minimal prices. Like last time I checked, it was 55 inches for 20 to 30,000, which is quite competitive. So what I would do is mainly launching a product in this sector and undercutting them by a little bit of margin, because there is already a little bit of margin, but I think in that space, and mainly attracting the value-driven consumers by designing a campaign around the value that the TV provides, like Ultra and the Ultra 4K HD. Okay, I'll come to the feedback later on. What are your strengths? My strengths. So
I am someone who is easy to talk to. I can go into the leadership roles because of my earlier exposure to these in the sports and other activities. And I'm, I would say, disciplined in the sense that what I get my mind into it, I then achieve it. And talking about my weaknesses, also I would say I tend to do things towards more of perfection, which takes a lot of time. So sometimes the opportunity in hand just goes to the wastage. And I'm also a very emotional person. I sometimes put the other person over me, which can have repercussions for the bad. Long-term goals. In the long term, I see myself as a mature business leader, which has built his rapport through good decision making. And I also want to be known as someone who leads by clarity, empathy, and I also want to lead many teams under me. I also want to mentor many people. And 10 years down the line, I see myself as the CMO of a big FMCG company. What do you think is the most important part of marketing? Most important part, the according to me, it's getting to know what the customer actually wants, not just shooting an arrow with a dark space. So getting to know what the customers really want, creating the value around it, and delivering it to the customer by communicating it in a way that creates value for both the customer and the company. Targeted companies to work for after IMI? Sir, ITC, Nestle, and Kellogg's. In which what is the total turnover of ITC group? Total turnover of ITC group. So that I'm not aware about. Where is it? Where is its headquarters? No study done about ITC. Just you think ITC is good, so you should join. I studied the companies that visited IMI. No, you didn't just studied the names. You're not gone in depth, so you like to sail on top. Okay. Any news you have followed recently? So the European Union trade deal that has happened. After that, also something big has happened. Yeah, sir. Yesterday, the US cut the tariffs from 25% to 18%, but the 25% of tariff still holds that they have imposed for importing the Russian oil to India. Plus the penal import duty, which was put as a penalty, 25%. Yeah, that has also been removed. That has been. There is a 7% fall here, and it has been linked to that you should not buy. Okay. Any other news you have followed other than these two? The stock market jumped 3% today because of the news. Okay. The US news. Yeah. Why this was so important? So, sir, basically more than 20 to 25% of the exports that we do come from the US, and that too in the textiles, pharmaceuticals, and agricultural goods. So these sectors basically employ mostly of the workforce that is into business. So an tariff of 50% is very bad for these people and for the Indian companies. It is a saying that if you are a good salesman, you can sell anything. Do you agree with it? Yes, sir, somewhat I agree with it, but you have to know the nitty-gritty of the product that you are selling. You have to go in depth because you don't know what the customer can ask you, and you have to be prepared for everything that comes to you. Who is the role model you have? Sir, my role model is my father. Other than that, in the corporate world, whom we can relate? Other than corporate world, sir, I would say Darshan Patel, who is the founder of Winnie Cosmetics. Okay. Why you like He led the campaign of fog in India, which it was done like 15 years back in 2010, but it is still relevant today. That he created a narrative around the mainly the common slangs ki kya chal raha hai, fog chal.
What is the single biggest achievement till date? Single biggest achievement till that I got selected for the national level softball competition when I was 15, but it was. So why you are not pursuing that further? So, sir, I went to Mumbai after that. In Mumbai, there is not that much of exposure of softball, and also there is not that much of, you know, return of in softball if you play in India. What is your single most important contribution to your father's business so far? Sir, for my father's business, it is mostly into IT and software. So I don't think that I hold the competence. You shared that he is doing stock market. No, sir. What is he doing? Trading in software. He runs an IT company. Yeah. Okay. So he makes softwares. No, sir. Trading. Trading of softwares, like basically he gives the software of different companies to different institutes, colleges, and institutes, and helps in building data centers and data what labs. kind of softwares are they? So those are mainly engineering and medical softwares. Like, for example, there is a fan. If you tilt the fan to a different angle, what will happen to the wind spread, where will the wind go? And in the medical sector, the whole body of a person, if you cut that way, and what will happen to the rest of the So body? these softwares are from which companies? Sir, Indian or abroad? Sir, these softwares are, sir, mostly abroad. There was a franchise that he holded that was for abroad gigabyte networks. So NetSim, and after that we lost that contract. They are app driven or website driven? Sir, they build the whole infrastructure around the software, from the hardware and the software and servicing of that software, updates of software from time to time. So he gets a royalty or a Yes, sir. per unit say sold. Yes, sir. Now he has pivoted to government tenders and that stuff. How is Punjab doing? Sir, Punjab is, to be honest, not doing relatively that good right now. It is being projected that this fiscal year the debt of Punjab will reach to around 4 lakh crores, which is too much of a state to handle. And mostly the main spendings of Punjab are going towards paying off salaries, pensions, and freebies, free subsidies in electricity. These all things account to around 95% of the revenue that it is generating. So what is left is 5%, and the deficit that it borrows to fund the capital expenditure that it has to do. So it is not a very good cycle, I think, that Punjab is gone into. If you are the Chief Minister of Punjab, how will you revive Punjab? So firstly, I will open all the good institutes in Punjab, like IIMs, medical colleges and engineering colleges, and build infrastructure around it, that students from other states and other countries also come to Punjab to study, to make it an hub in education, and make a special economic zone for all the companies to get here, and make a good job market. Basically, the Punjab is famous for agriculture, not education. He's talking about education. Sir, I will come to it, sir. For also for the agriculture sector, you need good minds to get into it. Question aata hai to you ask. You also need good minds to get into it. So Punjab is, as you said, mostly famous in agriculture. So I will, come with schemes that what is agriculture? Agriculture basically is something that deals with the raw material. So raw material is the basic of any product, and it is the cheapest of any product. So value addition is not being done correctly in Punjab right now. Okay, what is the difference between a leader and a manager? So a leader leads with an example. Leader takes everyone keeps in mind the growth of everyone he is dealing with. A manager is basically only क्या बोलते हैं उसको before the target achieving, getting the work done, not he is leading with example.
So you are which manager or I would say I'm a leader. where did you demonstrate your leadership other than the sports thing? Other than the sports thing, sir. How many is that? What is the team size in that softball and the games you play? Sir, first is the pitcher, and there are a catcher, first base, second base, third base, and SS in between, left So out. your strength right was out. what? I was the pitcher. Okay, we end it now. Go to the feedback. Introduction we already discussed. It's now better. थोड़ा सा सेकंड वाले में हमने फादर वाला मिस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली, जब हमने शॉर्टन किया ये ना मिस करना, इट्स गुड. देन व्हाई नो जॉब आफ्टर MBA, थोड़ा सा वीक ये आंसर, बेटर कर सकता थोड़ा वीक आंसर है, कन्वेज कंफ्यूजन. तो आप बोलो जो रियलिटी है वो भी एक रियलिटी थी. I passed out last year and unfortunately very few companies visited last year due to the recessionary environment, and the jobs offered were limited and not of very good profiles. Okay sir. ये रियलिटी भी थी, कई बच्चों ने बताया जो पहले नर्सिंग जी बीबीए वालों को प्लेसमेंट होती थी शायद 10-11 की, that has gone down to 4-5 lakhs. 4-5, yeah. Plus placements are offered not very good profiles here, and postings are in very difficult cities, etc. But means you don't Sir, save but they any, can you cross don't question. save anything in 4 to 5 lakhs. Sir, it is the average package that they will talk about. So, but the top students that got placed. Okay, so you say why, sir? I agree with you. One side of looking at it is the top ones would be 10-12, but they are very few, 5% only. But on the other side, there were 2 to 3 lakh also. Sir, if they ask why you were not. If this was the average, yeah, I reached till the final few rounds of these companies. कौन थे ज़्यादा पे मास्टर्स? Sir, finance roles ही थे. कौन पे मास्टर था? एक कंपनी का Deloitte. Deloitte. तो बोलो कि Deloitte आया था. I reached till the final round of Deloitte. ऐसे बोल दो. हाँ, थोड़ा बहुत स्टोरी सुनाना पड़ता है मेरी. तो उसमें earlier Deloitte used to recruit 30-40 people from our campus, but this year they recruited only 5. Okay. ये MBA वाले में तो ये सुन रहा हूँ मैं. तो प्रॉब्लम है, they are not, most of the old big recruiters are not recruiting big. The recruitments are 1/6 in terms of numbers. Second is numbers पे रहना पहले. The number of recruiters had reduced, and the number of recruiters who used to recruit X number, now they were recruiting X by 5. So though I qualified to final rounds of 2 companies, but I could not make it. And then I thought it is better to prepare for MBA and then go to the MBA college and then get placed. थोड़ा इसके आसपास ये अगर ग्रिलिंग पे आ जाए तो ज़्यादा ग्रिल कर देते हैं मेरी, बट कोई बात नहीं, यू होल्ड योर नर्व्स एंड होल्ड योर सेम स्टोरी. Okay sir. Why IMI decent है? मार्केटिंग, फाइनेंस, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ओवरऑल गुड, ठीक है. लोकेशन बट ठीक है. एंड माई टारगेट कंपनीज आल्सो कम हियर, ये ऐड कर लेना. एंड माई टारगेटेड कंपनीज टू वर्क फॉर लाइक ITC एंड एटसेट्रा, एशियन पेंट्स, दोनों आती हैं, बर्जर एटसेट्रा, दे आर ऑल कमिंग हियर. व्हाट स्पेशल इन मार्केटिंग, ठीक है. ये सेल्स एंड मार्केटिंग का बड़ा वीक सा आंसर है जो आम बंदा देगा. बना रहे थे आंसर आप, यू आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. सो वेयरएज पिछली वीडियोस देखी नहीं है इसका मतलब. सर मैं देखी थी, इसका आंसर था मेरे दिमाग में एक अच्छा सा, वो थोड़ा खिचड़ी बन गई. First thing is sales is part of marketing. Marketing is a much bigger concept. It should start from here. Marketing is in my view, marketing is a much larger concept, much larger domain, and sales is part of the marketing. Sales is where transactions take place. End product. Transactions take place. Okay. Whereas marketing starts, और मैंने इसीलिए यहाँ पे मुझे वो आंसर्स अच्छे नहीं मिले थे, तभी मैंने दोबारा पोक किया. वो भी करेगा जानने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग है मार्केटिंग की अच्छे से कि नहीं. देन आई आस्क यू कि यू आर द मार्केटिंग चीफ ऑफ ए टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो सबसे पहले अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है, उसका फिलिप कॉटलर की बुक मैंने बार बार बोली हुई है, आपने शायद नहीं पढ़ी. फिलिप कॉटलर की बुक है. देन कोई भी बोला गया था टाटा मैकग्रा हिल की एक
मार्केटिंग मैनेजमेंट की लेके वो भी पढ़ डालो, दोनों नहीं की हुई अभी भी देख के कर लो, एटलीस्ट फिलिप कॉटलर तो कर ही दो। ठीक है। इन दोनों में इन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साइकिल दिए हुए हैं। टाटा मैग्रा-हिल इज ए पब्लिशर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक्सेट्रा, कोई भी होगी दोनों में से, और फिलिप कॉटलर की बुक्स हैं। नाउ वट एवर दे टॉक 7 P's or stratification, STPs, etc. You need to cover that when you talk about TV. Example दे दिया टीवी का. I wanted to make it easier for you. That's why I give you example. He will just tell you are, marketing chief of a automotive company. अब आपको नहीं पता बाइक है, स्कूटर है, क्या नहीं है, तो उनसे पूछ लेने का, सर कैन आई इमेजिन दैट इट इज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एंड इज इट बाइक और स्कूटर? तो वो कहेगा या यू कैन इमेजिन, तो कहना देन आई विल इमेजिन ए बाइक सर, एंड देन आई विल फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज हु इज माय टारगेट कस्टमर फर्स्ट थिंग, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माय टारगेट कस्टमर 5 years down the line or 10 years down the line, and what is the product, my product offering to that, what is that customer wanting today, what is that customer likely to demand or want 5 years down the line, what is that segment going to demand 10 years down the line, what my product is fulfilling today, his aspirations, he is my customer, what my competitor's product is fulfilling those aspirations today, what my product is going to fulfill in 5 years, what it is going to fulfill in 10 years, as per his perceived change demands, perceived change expectations. Okay. So वहां से कहानी इस तरह से फ्लो करे. I gave an example of Rahul Bajaj going from Bajaj Chetak when Chetak was in waiting period. 18 महीने का वेटिंग पीरियड था इन बजाज चेतक के ऊपर, जो स्टेपनी वाला स्कूटर था. कोई नहीं सोचेगा कि उस टाइम कंपनी बाइक्स बनाने की तरफ काम करना शुरू कर दिया, और विद इन 2 years द बाइक्स killed Chetak in a way, but there was Vespa also, there were other scooters, all scooters were left behind. Hero Honda got the market, Yamaha got the market, and Bajaj and TVS bike, new segment. So earlier, if he had been a relaxed kind of a guy, he would have just waited कि अपना तो 15-16 महीने का वेटिंग पीरियड है, चलो ऑपरेशंस पे फोकस करो इधर. बट he had the foresight that perceived demand. The youth is increasing. Youth doesn't like stepney वाला स्कूटर पीछे लगा हुआ. They consider it as a status stigma. कभी पापा चोरी करके घुमाने के लिए ले गए is good, but not a trendy. It doesn't fit with the youth's aspirations. 5 years down the line, my youth customers will be more. Number of youth in India is increasing. Number of roads are improving. So I may not need stepney. Tireless, chalo wo punctureless tires, etc. is a different game. But road condition is increasing. Stylish, etc. etc. So this is how forecasting, मतलब you have to think all those things. मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है. ये जो था आंसर, ये भोले वाले बच्चे वाला आंसर बना के मैं कुछ बता दूं. ये जो आंसर आप कर रहे हो, अगर ऐसे कर गए 110% सिलेक्शन. दे विल अंडरस्टैंड कि बंदे को पहले फंडे लिया है, इज 80% रेडी फॉर अस. फिर आ गया, आपने ये कर लिया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लिया, अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कर लिया, आज कहाँ गैप्स हैं, आगे कहाँ गैप्स होंगे 5 साल 10 साल. देन आई विल, दिस इज ऑल कॉल्ड प्रोडक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज. इसमें आपने ये डालना है, एक स्मार्टनेस है कि मैं सर्वे कराऊंगा among my existing customers. Okay. I'll do a online survey. I'll tell people whosoever participates in this, I'll give you 100 rupee or 200 rupee Amazon voucher or Zomato voucher, Plana Dimka. So if I push it through LinkedIn or YouTube marketing, etc., Instagram push. So if I reach 1 lakh people, I think at least 1,000 people will go for the survey. Then I'll seek their feedback about this product with the present bike. What additional features you would like to have. अब एक बहुत प्यारी ऐड आ रही है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किसकी है. उन्होंने फर्स्ट टाइम बाइक में क्रूज कंट्रोल ऐड ये किया है, शायद इसकी हीरो की है. तो वो पीछे एक डिजिटल सा कार्टून चलता है साथ साथ. ही इज लाइकिंग दैट बाइक अ लॉट, एंड बंदे को नहीं तो हर टाइम बाइक ऐसे रेस पे रखना पड़ता है हाथ.
तो वो ऐसे दिखा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, साथ साथ बाइक चलाते हुए इधर कर रहा है पकड़ के। तो ये वट एवर एडवांटेजेस फर्स्ट बाइक to offer cruise control. It's not a small thing. A feature which a company could perceive it will like to change in future. मतलब it is a customer delight of a thing. Number one. Number two, they could perceive कि कारों में cruise control आ रहा है, मजा आ रहा है, लोगों को आराम से बैठ जाते हैं। और वो भी है, क्या नाम है, ADAS भी है। कल को कोई बाइक में भी ADAS भी देगा। So once ADAS plus cruise आ गया तो his tension is very less. गियर्स ऑटोमेटिक चेंज होंगे, etc etc. He's just relaxing and he's enjoying sceneries, etc. He can have more focus on the road. So these kind of things. तो फिर आया ये सारा प्रोडक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज है। सर्वे अमंग माय एग्जिस्टिंग कस्टमर, सर्वे अमंग माय टारगेट ग्रुप, एंड आई विल आल्सो आस्क देम व्हाट दे वुड लाइक टुडे, एंड देन माय लाइकली कस्टमर सेगमेंट, उसको भी मैं सर्वे कर लूंगा, ताकि जो फीचर उनको 5 साल 12 10 साल बाद आने वाले मेरे जो फ्यूचर टारगेट ग्रुप होगा मेरा, जो मुझे पता है कि इस ब्रैकेट वाला एज ग्रुप होगा, उन पे भी सर्वे करा लूंगा, ताकि वो फीचर मैं अभी दे दूं, एंड देन आई विल बी अहेड ऑफ द मार्केट। ये डायलॉग अगर आप बोला है, दिस इज व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ओके, दिस इज स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग बेस्ड मार्केटिंग। ऐसे प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हो गई, इसमें ही आपने स्ट्रेटिफिकेशन कर ली, टारगेटिंग कर ली, पोजिशनिंग कर ली। फिर आगे बाकी पीस दिमाग में रखो। फिर आपका ये प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट आएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटोटाइप बनेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग की फीडबैक, फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देंगे जो ये आते हैं कार, ऑटो, ये कार 24 फलाना टिमका, ये तो कार देखो एक्सेट्रा। इसी तरह कोई बाइक वाले होंगे, उनको देंगे, लो यार चलाओ, रिव्यू दो, गिव अस फीडबैक। यू विल गिव इट टू द सम ऑफ योर एग्जिस्टिंग यूजर्स। अगर आप बाइक में हो, पहले अगर आप टीवी में हो, उनको दोगे, उनसे फीडबैक लोगे, कलर, पिक्चर क्वालिटी, जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट आए हैं पहले सर्वे में, जो 10 पैरामीटर इंपॉर्टेंट आ गए, आप उन पे उस पे फीडबैक लोगे। हाउ मच यू रेट आवर प्रोटोटाइप प्रोडक्ट फ्रॉम 0 to 10, वो आएगा। देन यू विल, जहाँ कम आएगी रेटिंग, यू विल टेल योर इंजीनियर, यार ये R&D में ये गड़बड़ है, ये 2 चीजें ठीक करो, ये स्पूल टाइम स्लो है, ये पिक्चर की क्लैरिटी वो कह रहे हैं वैसे ठीक है, बट ये सिनेमा मोड में जो चला रहे हैं तब नहीं है। आजकल हर कोई घर में सिनेमा मोड चलता है, तो अगर बड़ा टीवी है, उसको कनेक्ट करना है इसके साथ, होम थिएटर सिस्टम के साथ, तो यू नीड टू हैव पिक्चर क्वालिटी वेरी गुड इन सिनेमा मोड। तो वो बताएगा सिनेमा मोड में आपको कैसी लगी, ये कैसी लगी। फिर टेस्टर्स होते हैं, फिर आपके R&D वाले होते हैं, फिर बाहर के लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव देते हैं। तो हाउ डू यू कंपेयर आवर प्रोडक्ट विद TLC, हाउ डू यू कंपेयर आवर प्रोडक्ट विद सैमसंग, LG, सोनी एटसेट्रा। तो पहले तो टेक्निकल कंपैरिजंस करने हैं, और टेक्निकली यू हैव टू रीच वेरी नियर टू देम। टिल दिस स्टेज इट इज प्रोडक्ट, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट प्राइसिंग, पैकेजिंग, प्लेसमेंट, promotion, no. Now product is develop prototype, then prototype testing, feedback, you have improved on the product. Now you think, how will I place myself in terms of pricing? That is placement. कस्टमर का, कंपटीटर का क्या चल रहा है, इतना प्राइस चल रहा है, मैं कहाँ फिट होता हूँ। इफ आई एम ए ब्रांड लाइक, आप बोलोगे इफ आई एम सैमसंग और LG, I will have to position myself along with people of my Toshiba, etc., etc. If I am Sony, then I'll have to price. I can command some premium. So that at that stage, public will decide how to price the item. मोटा मोटा मैं आपको माइक्रो में बता रहा हूँ, आपने मैक्रो में बताना प्रोडक्ट। अगर वो गया गहराई में, जो जाने की चांस है IMI जैसे कॉलेज, देन यू नो ऑल दिस थिंग्स। Then you'll say प्रोटोटाइप हो गया, प्राइस, प्लेसमेंट होगी, पैकेजिंग हो गई, देन इज प्रमोशन। तो प्रमोशन में if I am targeting, what kind of audience I am targeting, so if any case, what market, if it is what type of advertising, TV advertisement, so I'll hire somebody like Shah Rukh Khan, who is very liked by the most of the people in India, youth icon भी है, ओल्ड एज का भी है, दोनों। प्रोडक्ट सेगमेंट की कौन सा है, अब जैसे अगर 40+ वाला है, कार्ड आया था, ये क्रेड आया था, तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को पकड़ा, माधुरी दीक्षित को पकड़ा, ये जो था क्या नाम है, नीरज चोपड़ा को बाद में पकड़ा, पहले ये था अनिल कपूर। पीपल whom we have grown seeing perform, so their target was 35+,
मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड यूजर्स आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनका 35 प्लस है, तो उनके पास ही बड़े बड़े कार्ड्स होंगे, उन्हीं को मल्टीपल कार्ड्स होंगे, उन्हीं को प्रॉब्लम आएगी कि उनकी पेमेंट्स टाइम पे हो जाए। तो मतलब दिस आई डोंट नो वेदर दैट थॉट हैड गॉन और नॉट, मुझे को ये लगता है कि दे वुड हैव टारगेटेड कि मेरी एज ग्रुप है 35 to 50 एंड फॉर दीज पीपल हु विल बी द गुड ब्रांड एम्बेसडर्स। सचिन तेंदुलकर, हाँ रवि शास्त्री था, मतलब सचिन जब जैसे गॉड की एड थी, गॉड प्रॉमिस, ये कार 24 की वंडरफुल एड, कुछ नहीं कर रहा सचिन तेंदुलकर से चलता हुआ आ रहा है कार्स के बीच में से, कार्स के ऊपर लोगो लगा हुआ है, स्पिनी, सॉरी स्पिनी, कार 24 में स्पिनी, तो ही इज जस्ट वॉकिंग एंड गॉड प्रॉमिस, ओनली सचिन, वी लाइक सचिन, that audience which is likely to sell the cars is in the what age bracket 30 to 50. They have a strong reliability quotient with Sachin, trust quotient with Sachin, and that is what they wanted to convey. God promise. सिर्फ एक लिफाफा पकड़ के वो आ रहा है, बस वहां से चलता हुआ. We like to see him do anything. As a almost 40-50% of our age population, we like to see Sachin do anything. So we liked him walking this that coolly, and then he says God promise, and he's the god of cricket, like so he's making a promise. So, गया ऐड दिमाग में कि और people stuck to it to watch it. Very few people will change when Sachin is walking in. छोटी सी ऐड थी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था. Nothing, he's just moving. Sachin's brand is used to max advantage. अभी आती हैं कई गाड़ियों की आ रही है, स्कोडा की. अच्छा, देन प्रमोशन में आपको ये आएगा कि what type of audience I am addressing, who will be the right brand ambassador for them, what will be the right mode to reach them. If it is Gen Z, you'll have to not go for TV ads, you'll have to go for Instagram, then and your ads will have to be less than 10 seconds. They can't be 8 seconds, 5 seconds. Their attention span is 6 to 8 seconds. After that, they will change like this. So these are the things how I will decide what type of customer I am targeting. Accordingly, my promotion strategy will be there, and multiple promotions. Something above the line, below the line. Above the line is television, etc. The newspaper, etc. Then रेडियो कमर्शियल अभी भी 94.3 पे FM जब भी चलाओ 50% ऐड ही चलती रहती है. यूट्यूब जब चलाते हैं तो एरिया, ग्रुप, एज, वो सब स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है उसमें. यू कैन सेलेक्ट इन ए बूस्ट. फेसबुक यू कैन व्हाट एक्सपोजर यू हैव एंड नॉलेज यू हैव अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग का कोई पता है कि नहीं? आप अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो. हाँ सर, ऐसा तो पता है. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव टुडे? Sir, the most effect, sir, Instagram. Okay, one is Instagram, other. Sir, right now Instagram is the only thing that is booming in advertising. Only नहीं है, YouTube marketing. YouTube marketing अभी YouTube sir, YouTube Premium is quite cheap right now. So परंतु मतलब पब्लिक देखती है फ्री. बहुत लोग YouTube जो सब्सक्रिप्शन होती है नहीं ली होती. So they are forced, they wait. जैसे इसकी पैड आती है तब करते. Almost 60% of the public of country, they have not bought YouTube Premium. Someone who is going to purchase your product. It depends on the product. Yeah. So if it is a product which is meant for those kind of confused people or not very happy to spend people, you will think YouTube also can be an option. Then SEO, search engine optimization, ये आज भी relevant है. 90% रेलेवेंट है आज के दिन में. हर कोई बंदा गूगल पे सर्च मारता है. एआई में भी चला गया अब. एआई पे आप पूछ सकते हो गिव मी टॉप 5 ब्रांड्स. वो भी एनालिसिस करके बता देता है. सम ऑफ द रिव्यूज आर सेइंग दिस, सम ऑफ द रिव्यूज आर सेइंग दिस. सो SEO is powerful, still powerful, though when ad is written there or sponsored is written, smart people always go and check the other, which is not the other 2-3 options which are not ad written or sponsored, but it still has attraction. It out of say 100 people, maybe 30-40 will go with sponsored thing. तो SEO में नहीं आता मेरे ख्याल से. आ जाता है. कीवर्ड्स अगर आपने परचेज की हो कि तो आपको अगर आप वो डालेगा कोई लुधियाना, कैट लुधियाना, तो it will come as ad or sponsored. Okay. पैसा दिया आपने, आपको ऊपर रख रहा है वो. For that you bid
इस इन 2 वर्ड्स के लिए आई विल पे दिस मच फॉर नेक्स्ट 1 month. Any other brand hit bullseye will bid. So we too may be fighting for CAT preparation if that is the case. So 5-10 people will bid for it, and then they will be given the right for next 1 month for Ludhiana, who will be in the number 1 position. फिर नंबर 2 है, फिर नंबर 3 है. ये हो गया सर्च से. इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. दूसरा होता है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक में क्या है, किसी ने सर्च मारा कैट प्रिपरेशन, इनको छोड़ते हुए नीचे गया, IMS लुधियाना पे क्लिक किया, एंड देन ही कॉल्ड. मेरे को ये लगता है कि इनकी एल्गोरिदम में दम है, एंड दैट ऑटोमेटिक, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लीड्स. हमको कईयों से पूछते हैं उनके कैसे पता चला, तो जैसे हमने गूगल में सर्च किया, तो इन ऑर्गेनिक लीड्स हाउ यू कम इन द टॉप फ्यू आर, नंबर 1 कुड बी रिव्यूज. उसमें कैट मेंशन है, क्लैट लॉ, कोई लॉ सर्च करेगा तो उससे वो स्पूल करता होगा उनका एल्गोरिदम. सेकंड कुड बी हाउ मेनी पीपल ट्राई टू कॉल ऑन द कॉल बटन, सो वाज इट दे आर इंटरेस्टेड इन योर थिंग. देन ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, वो भी सब रिकॉर्ड हो जाता है. गूगल से उनको कॉल किया, हमारे अरे इतना है, टारगेटेड मार्केटिंग इतनी हो गई. इफ मी एंड माय वाइफ आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट शूज, we start getting ads of shoes. This is where our data is sold. This is also targeted marketing done by somebody. सर्च तो पहले करते ही थे, शूज किया तो बार बार शूज की एड आ जाएगी. आई हैव बीन टारगेटेड बाय शूज कंपनी for okay, I need shoes, so they will keep on showing me for a long time until unless I say not interested or bought another item. Why you are not interested to be pushed there. So it was that you had searched. Now when you talk, it's listening. That's a privacy breach. But at the same time, this is the level to which things have gone. आपको बिना कुछ किए you will start seeing shoes. मैंने तो बात ही की थी सिर्फ. So you have been targeted by voice. Some people would be paying to Google or to give your data, and then you are targeted by them for push marketing. So this insurance में बहुत चलता है. प्रीमियम आपने कहीं से सर्च करने का शुरू किया, एटसेट्रा. So the point where we are, कि SEO, search engine optimization, is quite relevant even today. Then reviews is one. Then how many people clicked on directions? They want to visit you. How many people try to visit? So all these, and मेरे को जो लगता है अगर ये इस लेवल तक स्मार्टनेस चलेगी कि आवाज हमारी बात होती है, शूज देखते हैं और शूज पुश करने लग गया, तो they would be having how many people came within 5-10 meters of our place, or how many people moved in. So if it is if many people checked and they moved in this place, मेरे को लगता है that may be helping in the algorithm. होता है जियो टारगेटिंग बोलते हैं उसको. So that would be helping in in our non sponsored thing coming at the front. अभी लुधियाना में कैट प्रिपरेशन लुधियाना मिलेगा, IMS लुधियाना आएगा, ऑर्गेनिक. बाकी स्पॉन्सर्ड जो मर्जी मिले, फिजिक्स वाला फलाना का, आई क्वांटा शॉन्टा, तो दैट इज ऑर्गेनिक. तो ये टर्मिनोलॉजीज बोलोगे तो अच्छा लगेगा. इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी. टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी इसमें फिलिप कॉटलर की बुक में और टाटा मैकग्रा हिल की बुक में. ये और जार्गन्स हैं, मार्केटिंग जार्गन्स हैं. ATL, BTL, वो पूछेगा आपको व्हाट इज ATL, व्हाट इज BTL. अब आप पढ़ के आए हो वहां से नर्सिंग में, above the line, below the, where which is relevant for which kind of product. Above the line is relevant for which product. BTL is relevant. Above the line सर पुश प्रोडक्ट्स के लिए रेलेवेंट है. जैसे सर इंश्योरेंस. One is insurance. पुश प्रोडक्ट जरूरी नहीं है. A product which goes to masses. FMCG, fast moving consumer goods. ये ATL वो होता है ना जो बिलबोर्ड्स, TV commercials, newspaper, above the line. Newspaper, then all, I think these things, SEO वगैरह ये सब इसी में आएंगे. Above the line means you are doing it for masses. आइलेट्स की एड दे दो, सारा लुधियाना में से 10,000 लोगों ने देना है. टूथपेस्ट आप दोगे, above the line. टीवी पे आज भी एड आती है कमर्शियल, कॉलगेट का ये आ गया, वो आ गया, क्लोजअप फलाना ढिमका. तो ये above the line where it is the market is big, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स एटसेट्रा. ये पतंजलि आटा फलाना ढिमका, शहद, ह्यूज people buying it. 80 crore is the market size out of 100 crore. So that kind of things, ATL is more relevant.
Then BTL, below the line, direct marketing. You have a canopy in front of Mandir Gurdwara. You do flyers distribution at front in front of school, colleges, etc. That is all BTL, below the line. Okay. Directly hitting your target customer by giving in फिर कहीं vouchers होते हैं, seminar sessions, awareness sessions, etc etc. So those kind of things. ठीक है, तो ये ना ये इम्पोर्टेंट है, आगे इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिलिप कॉटलर और ये सेकंड का था टाटा मैग्रा हिल मार्केटिंग मैनेजमेंट, टाटा मैग्रा प्लस फॉलो मैड ओवर मार्केटिंग, और एक बुक है that I'll try if my son can share, that is fifth PDF. Oliver is a company which gives a lot of consultancy for marketing, branding, etc. I'll get the name. I'll share the book, cover of the book. I'll search after this itself. I'll share the name of the book. Okay. Oligui. They are into advertising, marketing, consultancy in big way, and many big campaigns they have done. Mad over marketing, MOM, ये एक इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक भी है, और काफी फंडू एड्स देते हैं. Then Oligui is a consultant. And then which are the famous marketing gurus? Are you aware? फेमस मार्केटिंग ग्रुप्स इंडिया पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा. और उनके ये भी पूछेगा कौन से उनके फेमस कैंपेन्स हैं. पीयूष पांडे, which were the main ones. Then this IMT गाजियाबाद का एक बंदा था, forgetting his name. ठंडा मतलब कोका कोला. He had designed that campaign. So इसका कोई एलुमिनाई, फेमस एलुमिनाई भी ध्यान रखना. ठीक है. फेमस एलुमिनाई. चलो आगे चलते हैं. लॉन्ग टर्म गोल, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स और डिसेंट गोल था. समटाइम्स बाद में ले आए थे, इट इज ओके. पहले लग रहा था वीकनेस शुड ऑलवेज स्टार्ट समटाइम्स. I look for perfection and I'm trying to improve on it. It's okay. Long term goals. Mature business leader is okay. Leading a team. ठीक था. In the field of marketing. In the field of marketing. Public advertising. Targeted companies to work for. ITC है तो ग्रुप टर्नओवर ये सब पता होना चाहिए. ठीक है. हेड ऑफिस कहाँ है, मेजर प्रोडक्ट्स, वेयर दे आर डोमिनेटिंग, इन विच प्रोडक्ट्स दे आर डोमिनेटिंग एंड व्हाई, एंड वेयर दे आर नॉट डोमिनेटिंग व्हाई दे आल्सो हैव ए परफ्यूम ब्रांड. आईटीसी पूछ सकता है. व्हाई एंगेज, व्हाई इट इज नॉट सेलिंग एज गुड एज अदर ब्रांड्स. फिर इनका एक वो भी होता है, डिओड्रेंट भी है, forgetting the name. So ITC का deodorant brand है. Why ITC has so much reach to all confectioners? Because of its matches. matches भी आती है ITC की, जो ये जिसका गिरता नहीं है. They have and these are premium item home light ITC product. Oh, अच्छा. And they have a leverage. आशीर्वाद आटा, thousand of things they would be having. So they have a network, they have a leverage. They can tell their guy कि ये भी sell करो तो धुआं है, and they sometimes do it. So in spite of that, why fog led, why ITC could not lead? So make an analysis. I'm forgetting their name, brand name. पर search करना ITC deodorants. और इसमें मार्केटिंग सेल्स में क्या है, और मार्केटिंग सेल्स में इस तरह से सपोर्ट करता है, जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है. एक मेरे बेटे ने आईटीसी में प्रोजेक्ट किया था, इसी में एंगेज प्लस इनका जो था नेम जो डिओड्रेंट ब्रांड है, एंगेज इनकी परफ्यूम्स का था. डिओड्रेंट लिखो, आईटीसी डिओड्रेंट स्प्रे. ये सब हो रहा है इसमें. एंगेज के ड्यूज भी होंगे. हाँ होंगे, एंगेज ही है. तो अब ये एक स्टडी उसने किया कि जो काउंटर होता है उसकी शेल्फ पे जो पड़े होते हैं उससे काफी सेल बढ़ जाती है. नंबर 1 एंगेज के वो पॉकेट परफ्यूम्स भी थे. फिर जहां पे पड़े हैं उसमें भी जो फ्रंट में रहा
कंज्यूमर इजीनेस, दो तीन देखे वो 2 लाइन पे जो उठा लिया, जो पीछे रह गया रह गया। तो प्लेसमेंट इतनी तक, ऑल स्मॉल थिंग्स कैन आल्सो मेक ए बिग डिफरेंस टू सेल्स। फिर इंसेंटिव टू द गाय हु इज सेलिंग, हाउ मच मार्जिन यू आर गिविंग, हाउ मच मार्जिन फॉग इज गिविंग। आपका सेल्स वाला बंदा गया, उसने अपने निकाल के आगे रख दिए बेच के, उसको पता है कि उसमें मेरा मार्जिन है 10 रुपया, फॉग वाला मुझे दे रहा है 25 रुपया, तो फॉग आगे आ जाएंगे जाते ही उसके। तो फिर सेल फॉग की हुई, फिर टीवी कमर्शियल्स, इन्होंने एक बेकार सी एड बनाई थी, उसकी क्या नाम था, शुमन गिल की, करोड़ों रुपए भी लगाए, तो एड डिड नॉट क्लिक। तो ये सिंबलिक हो गई थी, क्या चल रहा है जी, फॉग चल रहा है। अभी फॉग थोड़ा सा लोग बोर ना हो जाए, न्यू कुछ क्या पता अंदर न्यू है नहीं है, बस फ्रेश न्यू, ये कहानी है। तो फिर टारगेटेड कंपनीज टू वर्क का थोड़ा और डिटेल देखने, एनी बिजनेस यू फॉलोड, ये आज की जो लेटेस्ट है, पहले वो बताओगे यूएसए वाली, और इसमें आपके पास डाटा था 90 बिलियन 20-25%, इसको ज्यादा बोलो, इसमें तो अभी डाटा आना है। दिस इज ऑल क्वेश्चन मार्क, मतलब हेजी पिक्चर, अभी स्टार्ट होना है, 2 साल बाद देखेंगे क्या यूरोपियन यूनियन से इधर आ रहा है, क्या इधर जा रहा है। तो थिंग्स विल कम इन क्लियर इन ईयर्स टू कम। इधर तो है ना हाथ में 20-25% की एक्सपोर्ट मार्केट है हमारी यूएसए, और वर्ल्ड का 1/4 इकोनॉमी है। ये डाटा पॉइंट्स के साथ जहाँ बोल सकते हो वो पॉइंट पहले बोलो, और वैसे भी लेटेस्ट है। इसको बाद में मैंने कुरेदा तो निकाला, इसमें डाटा था आपके पास, तो जहाँ पे मैं अगर बैकफुट पे मैं मार सकता हूँ अच्छे, तो मैं खुद ही बॉल को जाके पीछे बैकफुट से खेलूंगा। अब मेरे को कोई बॉलर थोड़ा बोलेगा कि आप बैकफुट से मारो, तो आपने खुद देखना जहाँ आप स्ट्रांग हो वो पॉइंट। ठीक है। ऑल न्यूज यू हैव फॉलोड, व्हाई स्टॉक मार्केट से हम ठीक है, इफ यू हाँ सेल एनीथिंग, इट कैन हैपन फॉर 1 or 2 टाइम्स, ऐसे बोलो इसको, मेच्योर्ड आंसर ये है। बट जो इफ यू आर ए गुड सेलमैन यू कैन सेल एनीथिंग, आप इसमें बोलना सर 1 to 2 times इट कैन हैपन, बट फॉर लॉन्ग टर्म, you can only sell if you are adding value, if your product oblique process oblique service adds lot of value or delivers lot of value to customers. Without this, ये जो है ना स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है, अच्छा सेलमैन गंजे को ही कंघी बेच देगा। ये नॉर्मली चलते हैं जागरण ऐसे, यार गंजे को ही कंघी बेच रहा है। इट्स नॉट ट्रू, कर लेते हैं लोग, बट that will happen 1 or 2 times. But for a long term, your product has to deliver real value. Your product should be very good. कोई भी पूछ लेता है which fee is better, most important, तो product is सबसे important. सेकंड पे मेरे हिसाब से आता है people. अब जैसे ही बोला आपने people, आपका आंसर शुड कम, ये भी पुरानी इंटरव्यू में सब मैंने कवर किया, आज फिर बता रहा हूँ दोबारा। ये छक्के चौके हैं, एक बॉल पे 2 रन चाहिए, 6 मारो, ये वो पॉइंट्स हैं। व्हेन यू टॉक पीपल देन यू विल से आपके पास सारा मार्केटिंग का भी जूस है जो मिला। So because it is the people who will conceptualize a product, who will make the survey, who will get the feedback. It is the people who will use your product. It is the people who are using your product. It is the people who will use your product. It is the people who will give you the feedback. It is the people who will use it. So people, I think, is second most important after product. ऐसा आंसर दिया तो कैसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। और ये आज जो आज हम बात कर रहे हैं, ये दिस विल हेल्प यू इन द MBA क्लास आल्सो, पोस्ट MBA थिंग आल्सो। व्हाट इज योर सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट? तो इसमें हमने बेसबॉल वाला जो स्पोर्ट्स में किया था वो था, और इसमें थोड़ा सा वो भी लिया ना जॉब में जो किया था ना, बाद में मैंने वो बाद में मैंने पूछा था इन द करियर। तो एक स्पोर्ट्स का बोल देना, और अगर हो सके सेकंड, इफ दे आस्क एनीथिंग सेकंड, एंड प्लस अपनी तरफ से प्लस इन द जॉब आई डिड दिस, क्योंकि दिस आई आस्क्ड ये स्पोर्ट्स वाला है, फिर वो कहेगा स्पोर्ट्स में जाओ, अपने को तो उनको स्पोर्ट्स वाला बंदा चाहिए नहीं, वो तो चाहिए उनको बिजनेस वाला बंदा। तो बिजनेस वाला कहाँ है हमारा इंटरेक्शन, पहले ये बिजनेस 2 months पहले बिजनेस, ठीक है, 2 months की इंटरेक्शन में ही उन्होंने, मैं इसीलिए ढूंढ रहा हूँ उसमें मुझे दिखे कि बंदा क्या करके आया। बिजनेस वर्ल्ड से जब इंटरेक्ट किया तो क्या निकला, स्पोर्ट्स वाला तो ठीक है, मेरे पास स्पोर्ट्स नहीं है, मेरे पास तो आप आ रहे हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, हिज माइंड यू हैव टू थिंक व्हाट इज योर मोस्ट, ठीक है।
ऐप ड्रिवन और वेबसाइट ड्रिवन, पापा से थोड़ी डिस्कशन करो, बिग डिस्कशन. Challenges he has faced during COVID, during COVID, pre-COVID, जनरल, pre-COVID, post-COVID, और अभी प्रेजेंट, एंड हाउ ही नेविगेटेड एवरीथिंग. इसमें फिर कोई स्टोरी आप अपनी भी थोड़ी चला सकते हो. मैं भी फ्री था, घर में था, 8 महीने के लिए कोविड में कुछ ना कुछ मैंने किया, ऐसे किया है, ये किया, बना दिया, कस्टमर्स को पुश किया है, उनका मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी, मैंने एक ग्रुप बना दिया, प्रमोशन ये वो, वीडियोस बना बना के हम लोग कैसे चलता है सॉफ्टवेयर, मैंने उनके वीडियोस क्रिएट कर दिए, थोड़ा कंटेंट बना दिया. क्या बनाना है, वीडियो बनानी है, वो लैपटॉप पे शो कर रहे हैं कैसे चलता है, या प्रोजेक्टर में उसकी वीडियो बना बना के हमने, जहाँ हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते थे ड्यूरिंग 8 to 10 months ऑफ कोविड, वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियो प्रेजेंटेशन. We started sending them. So initial for 3 months post COVID, we had almost zero business, and then it started going up during, even when the lockdown was there, even when the curfews were there. We next 3 months we went to 20, and after that, even when the restrictions were there, we could reach at least up to 50% of our turnover, which still gave us decent oxygen to remain in business. ठीक है, क्योंकि loans were not very easily available, so we needed some cash flow to sustain. कुछ एम्प्लॉइज भी होंगे, तो उनका वो खानी बनानी, उनको हमने 50% सैलरी दी, बट 50 के हिसाब से भी उनको सस्टेन करना जरूरी था, और न्यू लोन्स वर नॉट वेरी इजीली अवेलेबल इन ड्यूरिंग दैट टाइम. पंजाबी तो ठीक था, थोड़ा सा ना थोड़ी सी ज़्यादा पेसिमिस्टिक थी स्टार्ट. आई थिंक सर नथिंग ग्रेट इज हैपनिंग यू. तो आप ये कहो सर, आई थिंक देर पंजाब इज नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज द वे इट शुड. ऐसे करके स्टार्ट करना, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव के आसपास बात हुई, बट अपनी बात हमने कन्वे भी कर दी. अब वो दूसरी तरफ बोला पंजाब, आई थिंक सर नथिंग ग्रेट इज हैपनिंग, आई थिंक एवरीथिंग इज बैड. तो पेसिमिज्म, नेगेटिविज्म, तो क्यों उसी चीज़ को हम ऐसे कन्वे कर सकते हैं कि सर हाउ इज पंजाब डूइंग. और आई थिंक इन माय व्यू सर, पंजाब हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. कहानी कहाँ आएगी, एग्रीकल्चर सबसे पहले है. एलपीयू को सोच के आप, या किसको सोच के ये बनाया पता नहीं, बट दैट्स लिमिटेड टर्नओवर, लिमिटेड साइज. एंड पंजाब, और उसमें भी एलपीयू में मेरे ख्याल से 50 से 60% स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं. और उसके बाद अभी पिछले 2-3 साल में जब ये फॉरेन का ज्यादा चला था, तो एलपीयू का भी पसीने निकल गए थे, इवन टू फिल देयर ओन सीट्स. अभी फिर से चलो बच्चे फॉरेन थोड़ा रुके हैं, तो दे आर लिटिल कंफर्टेबल, एंड मेनी अदर कॉलेजेस. नहीं, मेरा पॉइंट था कि रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को यहाँ कभी लेकर आए, क्योंकि उनके आसपास में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच्चे बाहर. आई गॉट योर पॉइंट. व्हेन इफ यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे दिमाग में क्या चीजें खटकी इमीडिएटली, कितनी देर हो, 5 years. So first you will do what can give you results in 2 years. If you are the chief minister, these things, getting big brands, big institutes, पहले आएगा, 2 से 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, चौथे 5वें साल में जॉब देते हैं. हाँ, I am gone, and my state doesn't benefit immediately. So I'll focus immediately जहाँ where I can make transformation with small effort, big return. बिजनेस वाले बंदे का फंडा ये होना चाहिए, कम से कम एफर्ट में कितनी मेरी ज्यादा रिटर्न आए. दिस इज बिजनेस माइंड. ओके, सो चीफ मिनिस्टर आल्सो यू नीड टू थिंक इन द सेम वे. लीडर, बिजनेस लीडर ऑफ ए स्टेट. तो कौन आज क्या है, हर जगह आलू, पत्ता गोभी सब लोग लगी हुई है. पंजाब में 80% एरिया इज कल्टिवेटेड एंड 99.9% इज इरिगेटेड फॉर एग्रीकल्चर. पंजाब इज एग्रीकल्चर ड्रिवन, एग्रीकल्चर लेड स्टेट. हमें इसी आसपास पहले आंसर बिल्ड करना, मुझे जो लगा. सेकंड, इसके इन लोगों के बच्चों के लिए, जब 2 बच्चे हो जाते हैं, फार्म छोटा है, 4 एकड़ का, तो प्रोडक्टिविटी निकल रही है. प्रोडक्टिविटी एक बात, 2.5 एकड़ से भी 1 साल का 1,20,000, वो एक हो गया. 2.5 एकड़, 4 एकड़. एट द सेम टाइम, इफ ही हैज 2 kids, व्हाट इज देयर फॉर द सेकंड किड? एक किड तो चलो एब्जॉर्ब हो भी जाएगा, he will take care of animal husbandry, साथ में भैंसे हैं, वेरका में दूध डालेगा, कुछ और पिग फार्मिंग, कुछ न कुछ छोटो मोटो कर लेगा, साथ में फार्मिंग कर लेगा. सेकंड किड हैज नो ऑप्शंस, उसके लिए क्या चाहिए? जॉब्स.
उसके लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्री। तो हमने कल बात की थी ना, आई विल ट्राई टू गिव ए वेरी स्पेशल इंसेंटिव पैकेज टू industries to come to my state so that the farmer's one son can be employed. I'll have two plan of action, sir, as a chief minister. One is my state is agriculture driven, agriculture led state. Almost 80% people of my state are directly indirectly employed in agriculture. So I'll try to make efforts on food processing. I'll make district wise hubs for different types of items. I'll try to go for helping farmers to go for crop diversification from paddy and rice. I will try to make cold storages. I'll try to make cold chains, etc., etc., and I'll help them market their products better by adding top agencies by moving from one state to another as a chief minister. इसमें चाइना का एग्जांपल ऐड कर दें कि उनका हर प्रोविंस के हिसाब से इंडस्ट्री लगाई है। Excellent. तो ये मॉडल पंजाब में हाँ, तो मेरे को चाइना का बेल्ट पता के नहीं था, हिसाब से मुझे चाइना का पता नहीं है, बट ये चाहिए, एग्रीकल्चर में होना चाहिए। तो बेल्ट के साथ फिर आई बाय ऑल दीज एफर्ट्स आई ट्राई टू increase the income of the farmer from the same acreage, acre land which he has. This is one pronged approach. Secondly, the same farmer, if he having two sons, his second kid, for him I should try to generate employability. So for that I'll work on three levels. Education, very good, so that he becomes ready for employability in India. Secondly, I will invite service sector company, TCS, Infosys, Wipro, etc., to come to Punjab in all districts. I'll tell them to open very good offices. I'll give them very easy leased amount land, government land. I have so much in Punjab. I'll give them at a very cheap price for 90 years, 20, 30 years lease, जैसे कई schools वगैरह को देती है government. कई schools को 40 years, 50 years का lease पर मिल जाता है, very less lease amount. So I'll try to invite them by giving them very cheap land, by giving them incentives. But I'll also try to persuade center if they can also exempt. We can make some SEZs where the centers can also exempt their part of income tax and their part of GST. And then I think like area in Baddi, the way it from around 200 crore turnover, in 5 years it reached 25,000 crore turnover by this kind of scheme. Similar thing I'd like to do in Punjab, and I think we can do 10 times more, because over there the train was little tough. The train linkage was less. In Punjab we have rail network, rail connectivity, road connectivity much better as compared to Baddi. ऐसे कर रहे हो तो ये मतलब समझे ना बात, चीफ मिनिस्टर हैं आप कह रहे हो ये अंडरस्टूड द डिफरेंस, ही विल थिंक ये बंदा कितना सोचता है। एज ए बिजनेस लीडर आप देखोगे कहीं पैसा डालना है जी, पहले दूसरे कब से मैं सबसे पहले कब से पैसा बनाना शुरू करूंगा? 1 year rehab, how I can squeeze it to 6 months. Then how, which items I should bring, how, which I should produce, how much I should sell, ताकि खड़े प्लांट का सबकी सैलरीज बिजनेस से जनरेट होए, ऐसे ना हो कि पंप करता हूँ। ये भी ऐड कर लूँ कि पिछले प्रोजेक्ट्स जो पिछली सरकारों ने शुरू किए थे जो हॉल्ट हो गए, उनको वापस स्टार्ट करके कि यहाँ पर काम हो सिटी सेंटर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, दुकान में और भी काफी मॉल, उस टाइम सिटी सेंटर वाज क्रिटिकल 20 years back. Today there are 5 barbs out city center, और वो तो so क्या करेगा वो? समझो जो कह रहे हो पॉइंट को, लार्जर गुड, चीफ मिनिस्टर इज सपोज टू इंश्योर लार्जर गुड, बिजनेस लीडर इज सपोज टू इंश्योर लार्जर गुड, तो चीफ मिनिस्टर तो स्पेशली वेलफेयर ऑफ माय पीपल स्टेट जितना है। अभी मैं देख के आया, मैं लेनी है फोटो, कल ले लूंगा। उधर संजीव अरोड़ा का इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, हलवारा एयरपोर्ट साथ में भगवंत मान का कुछ लगा हुआ है 10 लाख, और सड़क में इतने इतने खड्डे हैं। यहाँ से मैं यू टर्न लेके आया पकवाल रोड से ना, ऊपर से अनमोटरेबल रोड, मेरी पूरा एक्सल टूटने वाला था। एंड ब्लडी व्हेन आई सी हिम, हाउ विल मतलब दे आर too away from reality, and they will find the results. People are now getting irritated by these overheads. पहले आप ये congratulations on getting promoted, संजीव अरोड़ा की सर लगाई हुई है, उसका काम क्या था गवर्नमेंट ने बनाया सेंटर, तो वो भी चलो एक है, परंतु आप दे क्या रहे हो पब्लिक को? लॉ एंड ऑर्डर जीरो, माइनस, सड़कें टूटी हुई, इलेक्ट्रिसिटी
रेगुलर आ नहीं रही और आप ये चमका रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा ही पब्लिक, और दैट विल रिफ्लेक्ट इन द वोटिंग डे। ठीक है, ओवरऑल अच्छा चीफ मिनिस्टर वाला पॉइंट हो गया हमारा। देन फेमस एलुमिनाई थोड़े देख लेने हैं। देख लूंगा, और कंपनीज का देखना है। हाँ, लीडर वर्सेस मैनेजर भी बड़ा भोला जा आंसर देता सी, इट वाज हाँ। वेल कवर्ड। लीडर लीड्स बाय एग्जांपल तो है ही एक, लीड्स चलो ठीक है एग्जांपल वाला है, बट सबसे बड़ा है he gets the work done through inspiration. Okay. Inspiration rather than, whereas manager gets the work done through controls or administrative control. एडमिनिस्ट्रेटिव, तुम नहीं काम करोगे वार्निंग लेटर दे दूंगा, इस पर वार्निंग लेटर दूंगा, ये जुर्माना लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। तो ए मैनेजर शुड बी, सो पूछेगा which one do you like and why, can any leader I think has to be a manager sometimes, but I am sure any manager should be leader all the time. लीडर को भी कई बार मैनेजर रोल में आना पड़ेगा, जब पब्लिक को 10 बार इंस्पिरेशन से समझाने की कोशिश की लीड बाय, ये भी आपको मैं फंडू बात कर रहा हूँ, विद माय एक्सपीरियंस, माय ओन एनालिसिस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो माय ओन, this is practical. Leader will try to get the work done through inspiration, motivation, leading by example, but some people will still not comply, so sometimes he will have to become a manager to get them on track. So sometimes leader has to take a role of manager also. इसमें एग्जांपल दे दिया, तो यू आर एचआर गुरु। ठीक है, चलो गॉड ब्लेस, अच्छा होगा। कुछ ये इतने औखे नहीं है, बट ये है कि IMI कई बार बहुत ज्यादा घुसता है, 30-40 मिनट्स लगा देता है। अभी आज जो इंटरव्यू हुआ था, अच्छा ही है, कितना टाइम का हुआ था? 20 मिनट्स के करीब था, आपका 20-25 मिनट, और देखो काफी अच्छा पूछा, गुड इन डिटेल। दिस शोज ओवर द इयर्स आई हैव सीन IMI लाइक ग्रेट लेक्स नहीं ठोक बजा के लेता है। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूट तीन है प्राइवेट में, IMT गाजियाबाद, IMI ग्रेट लेक्स, प्राइवेट में 3 मैंने देखा अच्छे से करते हैं इंटरव्यू, सही बंदे उठा लेते हैं, वो आर नॉर्मली गुड। माइका कैसा है मार्केटिंग में? मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम क्या है, जब आप माइका में चले गए तो आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग के लिए रिजर्व निश हो गए। इफ IIM अहमदाबाद में 100 रिक्रूटर अगर आएंगे, तो उन 100 में से 10 इधर जाएंगे माइका, हाँ, और वो 10 इधर भी आएंगे, बट जो बाकी 90 है वो इधर नहीं आने वाले, ये इधर नहीं आएंगे माइका, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, आजकल इतना हो गया ना, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन, फलाना ढिमका, फ्रीलांसर बहुत पब्लिक बैठी है, और मीडियम कॉलेज वाले भी जो बच्चे अच्छे हाथ पैर मार के दे आर एबल टू add the skills. So if they have to get that work done by recruiting someone at lesser salary, so that makes you vulnerable from with IRMA. I've seen some students, somebody known to me, she went to this MICA, she got into ICICI. Replaceability is very easy. आप नहीं करोगे, कोई और आगे कंटेंट डेवलपमेंट, क्रिएटिव मेकिंग बना देगा, CDR, ये क्या उसमें कोरल कैनवा सब कोई कर देगा, कोई और। तो देरा मार्केटिंग सिर्फ वो थोड़ी, सिर्फ वही नहीं है, वो तो नहीं है, परंतु मतलब यू आर ICICI में, और क्या आप मार्केटिंग, ICICI में तो कुछ, तो ICICI ने रिक्रूट किया, पहली प्रॉब्लम। फिर गए कोग्जी नेट में, उसमें कंटेंट बनाना है एम्प्लॉइज के लिए, ये उसमें यूज कर रहे हैं आपको, आप और जगह हाथ मारते हो, बट फिर वहां पे IIM अहमदाबाद वाला मार्केटिंग वाला आता है, तो मार्केटिंग वाले के लिए सारी गेम खुल जाती है। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग फोकस ऑफ माइका थोड़ा फोकस कम है, और ब्रांड में भी इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग नाउ। आज से 20 साल पहले माइका वाज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं उसको मैका ऑफ मार्केटिंग, बट इतना कोई कहा नहीं। और वहां से अभी आप देखो प्लेसमेंट एवरेज विल बी 9 और 10, जो मेरे बच्चे उसका मैं बता रहा हूँ, शी गॉट आई थिंक 8 समथिंग, 8 और 9 एक काट से इन ICICI। हाँ कर, मैंने